को धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करिसु। मैं असम वासियों का ओर से हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को गौपुर की ये पवित्र भूमि में स्वागतम करता हूं। ब्रिटिशर गुली बुकुत पाती लई देशमातृर हके प्राण विसर्जन दिया शहीद कनकलता बरुआ, शहीद मुकुंद काकती और भारतर तिरंग पताकाखन सगौरवेरे गहपुर थानात उत्तोलन करा रामपति राजखोवाके धरि गहपुरर प्रतिगराकी महान स्वाधीनता सेनानीर प्रति मैं मोर गभीर श्रद्धा निवेदन करिसु। आजिर এই অনুষ্ঠান आमार राज्यर शैक्षिक और औद्योगिक यात्रार एक ऐतिहासिक माइलर खुटी। मोर मनत आछे आजिर परा 4.5 बछर आगते गहपुरলৈ उत्पल बरा डांगरियार निर्वाचनी प्रचार सभात योगदान करिबोलै आहिसिलु। गहपुरर राइजर आशा और आकांक्षार प्रति श्रद्धा जनाई সেই निर्वाचनी सभाबुरते मैं घोषणा करिसिलु जे भगवाने बीजेपी सरकार লৈ আহিলে गहपुरत आमी कनकलता बरुआर नामेरे राज्यिक विश्वविद्यालय एखन स्थापन करिम। श्रद्धा राइज शिक्षा मंत्री हिसापे और अखमर मुख्यमंत्री हिसापे एतियालैके राज्यर प्राय 20খন विश्वविद्यालय और 25খনতকৈও अधिक चिकित्सा महाविद्यालयर निर्माणर काমৰ লগত प्रगति और विकासर লগত जड़ित হৈ অসমৰ বিকাশৰ যাত্ৰাৰ সাক্ষী হৈ থকাৰ সৌভাগ্য মোৰ হৈছিল। কনকলতা বৰুৱা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰসংগ যেতিয়া আমি উল্লেখ কৰিছিলো মোৰ মনত এটা চিন্তা আছিল যে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আমি এনে এগৰাকী মহিয়সী নাৰীৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিব খুজিছো जी गराकी महिषी नारी आमार राज्य और भारतर बारे जुगे जुगे प्रेरणार उत्स হৈ আছে और प्रेरणार उत्स হৈ থাকিব। शहीद कनकलता बरुआर नाम आमार मनলৈ অহাৰ লগে লগে प्रतिगराकी অসমবাসীৰ মনত देशप्रेমৰ एक अमल उत्साहर सृष्टि करे। সেইভাবে মই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলো যে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন যাতে ব্যতিক্ৰমী হয়, এই বিশ্ববিদ্যালয়খনে ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মনিৰ্ভৰতাৰ প্ৰতীক হয় আৰু আমাৰ নতুন অসমক সুন্দৰভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ उत्थान और विकासर एक प्रेरणार केन्द्रबिंदु हक। विश्वविद्यालयखনৰ परिकल्पना आमी लाहे लाहे आरम्भ करिसिलो। विश्वविद्यालयखনৰ आईन आमी অসম বিধানসভাত पारित कराइसिलो और এখন शक्तिशाली कमिटी गठन करि दिसिलो जे विश्वविद्यालयखনৰ शैक्षिक काठामो बा एकाडेमिक आर्किटेक्चर आमी प्रथমৰ পৰাই निर्माण करिम जाते এই विश्वविद्यालयখন শিল আৰু সিমেন্টৰ বিশ্ববিদ্যালয় নহয়, ই মানৱ সম্পদ নিৰ্মাণৰ এক মন্দিৰলৈ ৰূপান্তৰ হয়। ডক্টৰ পৰমেশ্বৰ আয়াৰ और केइबागराकी शिक्षाविदर लगत लग लागि এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আমি শৈক্ষিক কাঠামো নিৰ্মাণ কৰিছিলো। হিউম্যানিটিক্স
কলা বেসিক সায়েন্স বিজ্ঞান তার লগত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোয়ান্টাম ফিজিক্স ডিপ টেক মেশিন লার্নিং রবটিক্স ইলেকট্রনিক্স এই আটাইবোৰ যাক ইন্ডাস্ট্রি 4.0 বাবে প্ৰয়োজনীয় এই আটাইবোৰ শিক্ষা এই বিশ্ববিদ্যালয়খনত আমি যাতে প্ৰদান কৰিব পাৰো অৰ্থনীতি বিজ্ঞানো পঢ়িব ৰাজনীতি বিজ্ঞানো পঢ়িব পদাৰ্থ বিজ্ঞান পঢ়িব ৰসায়ন বিজ্ঞান পঢ়িব লগতে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোয়ান্টাম ফিজিক্স মেশিন লার্নিং আদিৰ বিষয়েও জানিব মই মনতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫তম বছৰৰ পিছত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাম লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ চিন্তাৰে 1948-50 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণ হৈছিল কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 2025 চনৰ নতুন অসমৰ আমাৰ বিকাশ আৰু বিবৰ্তনৰ ৰূপকথাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আজিৰ অসমীয়াই অসমৰ আটাইতকৈ উচ্চ মানৰ বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব সেই সংকল্পক আৰু অটুট কৰিবলৈ মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছিলো 2023 চনত যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ প্ৰতিটো ঘৰৰ অকণমান চাউল বা অকণমান মাটি আপোনালোকে আমাক দিয়ক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি এই মাটি প্ৰদান কৰিম অমৃত বাটিকা নতুন দিল্লীত নিৰ্মাণৰ বাবে আৰু আনটো কলহ আমি গহপুৰলৈ লৈ আহিম যাতে এই গহপুৰত কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্ৰ অসমীয়াৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেনেকে এখন আমি সুন্দৰ বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ আমি প্ৰতিজ্ঞা কৰিম আজি ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা যি নিজেই এক মহান ঐতিহ্য বহন কৰে ৰূপকুৱাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কনকলতা বৰুৱাৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ স্বাধীনতা প্ৰয়াসী জনগণক মিত্ৰ বাহিনীত যোগদান কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিছিলে আজি তেনে কৰ্তাসকলেও মোক হাঁহিছিলে বেলেগৰ কথা মই নকওঁৱে আৰু যেতিয়া মই কৈছিলো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাতে একোখনকৈ দলং নিৰ্মাণ হ'ব তেতিয়া বহুত মানুহে কৈছিল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সপোন বেচা কামটোৰ বাদে আৰু একো কাম কৰিব নাজানে কিন্তু সময়ৰ লগে লগে আমি প্ৰমাণ কৰিলো আমি সপোন দেখিবও জানো আৰু সপোনৰ পম খেদি আমি আকাশখন চুবও জানো আৰু তেনেকৈ আমি এটা নতুন অসমীয়া জাতি নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছো আবেগৰ ওপৰত নহয় বিবেক আৰু যুক্তিৰ আধাৰত আৰু আন্দোলনৰ ওপৰত নহয় শিক্ষাৰ ওপৰত আৰু আবেগৰ ওপৰত নহয় প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত আজি আমি ভাৰতক নেতৃত্ব দিব বিচাৰো আৰু সেই কাৰণে আজি অসমত সেমিকণ্ডাক্টৰৰ বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ নিৰ্মাণৰ কাম অসমত আৰম্ভ হৈছে অসমত ৫,০০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আজি আমাৰ অসম আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ফালে আগবঢ়া এখন নতুন অসম যিখন অসমে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত অকল দলং বনাবই শিকা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি সুৰংগ বনাবও শিকিছে যেতিয়া আমি সুৰংগৰ প্ৰস্তাৱ লৈছিলো তেতিয়া কেৱল মাত্ৰ গাড়ী অহা যোৱাৰ কাৰণে লৈছিলো কেইটামান দিন আগতে
मैं प्रधानमंत्री डांगरिया साक्षात करूते प्रधानमंत्री मुक কৈছিলে যে गाड़ी जुआ अकल टानेल नकरिबी गाड़ीर लगते रेल गाड़ी যাব পৰাও টানেল কৰিবি সেইভাবে এতিয়া গহপুৰৰ টানেলেদি अकल मात्र मटर गाड़ीए नाजाब गहपुৰৰ टानेलेदी राजधानी एक्सप्रेसो যাব गहपुৰৰ टानेलेदी रेल गाड़ीओ যাব আজি आमी एने धरणे गहपुरक सजाई पৰাই तुलिब खुजिছো विश्वनाथक जिला करार प्रतिश्रुति दिसिलो प्रतिश्रुति आमी पूर्ण करिसिलो विश्वनाथत मेडिकल कलेजर प्रतिश्रुति दिसिलो प्रतिश्रुति आज पूर्णतार फाले और गहपुरत राज्यिक विश्वविद्यालय प्रतिश्रुति दिसिलो तारो आज आमी साक्षी हबलै इयात समवेत होइছো निर्वाचन आहे निर्वाचনৰ पिছত मानुहे कोৱা কথাবোৰ पाहरि যায় किन्तु मोर कारणे निर्वाचन राजनीतिर अस्त्र নহয় मोर कारणे निर्वाचन होइছে এটা तीर्थयात्रा য'ত जिए संकल्प करूँ ताक जाते परवर्ती 5 বছৰত आमी रूपायन करिब पारो कनकलता विश्वविद्यालय आमार आत्मविश्वास नतुन অসম আৰু प्रगतिशील অসমক प्रतिनिधित्व करिब আজি এই বিশ্ববিদ্যালয়খন आधारशिला स्थापনৰ কাৰণে आमी आमार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण डांगरियानिक आह्वान जनाइसिलु हमारे बीच में निर्मला जी कल ही आए थे कल मैं निर्मला जी को लेके गया था जागीरोड में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बन रहा है 30,000 युवाओं को वहाँ नौकरी मिलेगा और पूरा वर्ल्ड का कम से कम सबसे ज्यादा शिप्स बनने वाले हमारे जागीरोड वर्ल्ड मैप में पहुंचेगा अगले साल का अप्रैल महीना से हम शिप्स का भी प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा ये सपना मेरा नहीं था आज से 4 साल पहले मैं जब निर्मला जी को मिलने गया था सीएम बनने के बाद निर्मला जी ने मुझे बोला था कि असम में ऐसा इंडस्ट्री लेके जाओ जो पूरा असम का युवाओं को एक नया उत्साह और उमंग से भर देगा निर्मला जी का कारण प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद का कारण आज हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मिले हैं फर्टिलाइजर नामरूप में अगली महीना से शुरू हो जाएगा हमारे धुबरी में थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनेगा साथों साथ हमारे टनल होगा काजीरंगा में एलिवेटेड कॉरिडोर होगा हमारे गुवाहाटी में रिंग रोड होगा IIM आएगा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी होगा हर रूप से आज असम भारत की एक विकसित प्रदेश होने का रास्ता में निकल चुके हैं और ये तमाम जो काम हम लोगों ने किया ये यात्रा में निर्मला जी का आशीर्वाद हमेशा असम का साथ रहा है इसीलिए मैंने निर्मला जी को बोला था निर्मला जी आप खुद एक नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का संसद में 8 बार तक बजट देने वाला निर्मला जी ही प्रथम महिला वित्त मंत्री आज जैसा नारी शक्ति का महिषी रूप हम और कहीं देखने नहीं मिलता हूं जैसे कनकलता बरुआ ने हमारे देश के लिए अपना जीवन को निस्वार कर दिए थे इसीलिए मैं निर्मला जी को बोले थे कि आपको ही आना पड़ेगा गहपुर में और आपको ही ये आधारशिला करना पड़ेगा निर्मला जी ने मुझे बोला था कि आप भी कर सकते हैं मैं बोला नहीं कनकलता बरुआ नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व करते थे और आप आके जब इनका आधारशिला करेगा विश्वविद्यालय